क्लास 12 पास गरेपछि नर्सिङ पढ्ने हो? ग्रेजुएसन पछि के? करियरको चिन्ता हटाउनको लागि सिलिगुडीको सबैभन्दा ठुलो हस्पिटल डिसानको पहलबाट डिसान नर्सिङ स्कुल र कलेज सिलिगुडीमा सबैभन्दा धेरै जिएनएम र बीएससी नर्सिङको सिटहरू उपलब्ध छ। जिएनएम एन्ड बीएससी नर्सिङ 2024-25 को सेसनको लागि एडमिसन धमाधम भइरहेको छ। स्कलरशिपको पनि व्यवस्था छ। एडमिसनको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9051715171 डिसन नर्सिङ स्कुल एन्ड कलेज फुलबारी सिलिगुडी। यो समाचारको सहप्रायोजक न्यू हिमालयन मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेड। यहाँहरू सबैको विश्वासिलो र भरपर्दो सहकारी संस्था मोटरस्ट्यान्ड कालिम्पोङ र ओसिएस कालिम्पोङ वान स्टेप सल्युसन फर स्टडी अब्रोड। मोटरस्ट्यान्ड कालिम्पोङ कन्ट्याक्ट नम्बर 933253। पश्चिम बङ्गाल सरकारको पछौटे वर्ग कल्याण विभागद्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थीहरूको निम्ति GWG अनि नीट जस्ता परीक्षाहरूको निम्ति निःशुल्क कोचिङ दिने कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2024-25 को उक्त कोचिङको आज कालेबुङ जुबली स्कुलमा आरम्भ भएको छ। यस कोचिङमा यसपालि 40 जना विद्यार्थीहरूले भाग लिएका छन्, जसमा अधिकांश अनुसूचित जनजातिका विद्यार्थीहरू सामेल छन्। कोचिङको आज पहिलो दिन ओरिएन्टेसन अर्थात् अभिमुखीकरण कार्यक्रमको अवधि कालेबुङका जिल्लापाल सुब्रमण्यन टी प्रमुख रूपले उपस्थित रहेका थिए भने उनका साथमा प्रोजेक्ट अफिसर तथा सम्बन्धित विभागका जिल्ला संयोजक अनबिल दत्ता उपस्थित रहेका थिए। उल्लेखनीय छ, आजबाट सुरु भएको यस कोचिङ कार्यक्रम आगामी वर्ष हुन गइरहेको GWG अनि नीट परीक्षाहरूसम्म चल्नेछ, जसमा हप्तामा शनिबार र आइतबार गरी 2 दिन यी 40 जना SC/ST विद्यार्थीहरूलाई कोचिङ प्रदान गरिनेछ। यी विद्यार्थीहरूलाई प्रति महिना 300 रुपियाँ गरेर स्टाइफन्ड पनि प्रदान गरिनेछ। यी विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षण दिनका निम्ति विभागको पक्षबाट ध्रुव शर्मा, प्रदीप ठकुरी, उपासना लाबर, निरुपमा बस्नेत आदि फ्याकल्टीहरूको व्यवस्था गरेको छ भने प्रोग्राम कोअर्डिनेटरको रूपमा रिता शर्मा रहनेछन्। So I request all of you that please don't skip classes. Take each and every class and ask and clarify your doubts with the teachers. And also we would arrange for periodical mock tests. So also try to take all the exams so that you can know the status of your preparations and you can adequately get prepared. So nothing much to say more. As Sarah said, we will definitely meet with you in periodical basis, probably once or twice in a month, so that we can get the feedbacks from you, and we will try to improve the things as the time goes by. So on this note, I would like to thank all of you for coming, for attending this orientation class. Completed my first day from St. Joseph's. So I'm from Ross Bazar University and I'm studying class 12 in Asian Institute. Yes, you. My name is Omo Sherpa and I'm from St. Philomena Girls High Secondary School. I've taken PCMB as my stream in class 12. My name is Fofius Flipja and I'm from St. Philomena Girls High Secondary School. You are also from 12th standard? Class 12 last. My name is Angel Butcha and I'm from St. Philomena Girls High School. Class 12. My name is Festival and I'm from St. Philomena Girls High Secondary School. My name is Amisha Devja. I'm currently in 12th standard from St. Philomena Girls High Secondary School. Good morning sir, my name is Ashwini Varman and I study in St. Philomena in class 12. That's it. HUMI and I'm doing my 12th. I'm studying in 12th standard. My name is Pramod Liksa from SMI. And I'm studying in Pamanjyoti Vidyapith in class 12. Samsam Ikbang and I'm studying in Pamanjyoti Vidyapith class 12. Present here, my name is Sangdong Dilama and I'm studying in Narayana School and I'm in class 12. I study in SUMI and presently I'm in class 12.
My name is Pindu Silva and I'm a student of 12th grade of Scottish University. My name is Puran Tamam. I am currently studying in SMI Kalimpong. My name is Wamrut Tawang and I am from SCM. My name is Kunjang Siringbhatia. I passed my class 10 examination from St. Xavier School, Pedong, and I'm currently studying in SMI Kalimpong. So my name is Hinsik Subal and I'm currently studying at SCMI. My name is Currently studying at SCMI. My name is Norjan Simik. I'm studying in Naran. My name is Shubhisha Tamang. I'm studying in India Vidya My name is Arya Rucha and I'm from Ashwin. My name is Emma Vidya and I'm studying in Ashwin. My name is Jogyashree, the scheme name is Jogyashree. So ये तो स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है. So to provide free training for students, eligible students for JEE and NEET, because generally we have certain shortages in quality training institutes in many places. So actually to address that issue, the government has opened the training institutes. Like there is an IAS UPSC ka jo coaching center that has been presently it's functional in Kalimpong College. So earlier there was no nearby, there was grievances from various students who are preparing. So there is no proper coaching centers for UPSC exams or WBC exams and similar such competitive exams. So see, now that is there, and even a BDO office, BDO Kalimpong 1 office, there is a training center for WBC's exam. So slowly we are trying to open more such centers in many, in all our blocks and rural areas. So Abhi, as of now, this is a scheme. This scheme will train you for JEE and NEET, as you know. So last 2 years we are giving good results. Yes. Right. So last 2 years we are giving good results. Now this is the this year this is inauguration program also. So just I wanted to, since I have been first time I'm visiting, so I wanted to also meet you all. So take this opportunity, अच्छा से use कर लीजिए and try to give some feedback also. So we will also try to have some feedback sessions, something like what facilities you may need. Even recently we are going to have one more special study center, study area for UPSCs or other competitive examinations in the subdivisional library. That's like district library, the subdivisional library. There will be a separate area for preparations. The books are being purchased. So that is based on the feedback given from some of the students who are preparing. So just your feedback can give more information to us. उसके लिए कि हम लोग आपको और भी ज़्यादा facilities दे सकते हैं. So try to give some feedback regarding the course, facilities, whatever it may be. So you may require something else, you may require some old question paper copies, whatever it may be. So you can give the feedback to the teachers or whenever we are visiting, please give feedback. So your active participation only will give the success. So आप लोग देखा तो when somebody is going to Delhi or any other place for preparation, they will be actively participating. So that results also will be, it's not the difference between the talent. Same person going to other place, a better center, it is not only because of the centers or the coaching centers or anything. वो आप लोगों का पार्टिसिपेशन, so जितना आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, जितना आप लोग इसका यूज करने के लिए आप लोग एक्टिवली और डूइंग द हार्ड वर्क, that will definitely influence the results. So इसलिए I am requesting everyone to use this opportunity. And so based on your success, we can expand this program. So the government can expand this program, and it may benefit many such of your juniors or your fellow mates in the area. ठीक है? Thank you and all the best for all of you. नमस्कार. आज जो योग्यश्री प्रोग्राम का इनागुरल डे है. योग्यश्री प्रोग्राम आप लोग जानते हैं, ये हम लोगों का स्टूडेंट्स SC/ST स्टूडेंट्स का ट्रेनिंग के लिए JEE एंड नीट के प्रशिक्षण के लिए गवर्नमेंट का स्कीम है. तो ये 3 साल से चल रहा है. 2021-22 से लेके हम लोग प्रति बच्चों हम लोग ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट्स वी आर ट्रेनिंग. अभी तक ऑलमोस्ट 35 स्टूडेंट्स बोथ नीट और JEE मिलके 35 स्टूडेंट्स कलिम्पोंग का सक्सेस हो चुका है इसमें. इस साल का भी 2024-25 का पहला बैच आज शुरू हो रहा है. टोटल 40 स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 36 स्टूडेंट्स फ्रॉम ST कम्युनिटी एंड 4 फ्रॉम SC कम्युनिटी. तो आज ये इनागुरल सेशन है. मेरे साथ PO BCW
और NCSM कोऑर्डिनेटर्स है। तो आज ये जुबली स्कूल में अच्छा हो रहा है। ये तो वीकेंड में होता है, सैटरडे एंड संडे। इसी को लेकर गवर्नमेंट का जो ये है अभी नया अनाउंसमेंट में ये तो एक्सटेंड होगा कमिंग ईयर्स से। ये तो इवन माइनॉरिटीज एंड जनरल कैटेगरी का भी एक्सटेंड होगा। सो अभी तक ये SC/ST का है। इस साल का हम लोग ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, इसलिए शुरू हो रहा है। तो ये मैं सभी कालिम्पोंग वासियों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसी का अच्छा से यूटिलाइज करके बच्चा लोग को नीट व JEE जैसे कठिन एग्जाम्स का क्लियर करने का मौका हम लोग को मिलेगा। तो थैंक यू एवरीवन। दूसरा कम्युनिटी का भी कोई प्रावधान है क्या? हाँ, हो रहा है। अभी CM मैडम रिसेंटली अनाउंस किया और ये पॉलिसी लेवल में अप्रूव हो गया। अभी नेक्स्ट साल से हम लोग बाकी कम्युनिटीज को, माइनॉरिटीज का भी और जनरल कैटेगरी सभी को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। तो अभी तक ये इनिशियली शुरू किया, ये SC/ST PCW एंड ट्राइबल डिपार्टमेंट का उद्योग में शुरू किया। सो इसीलिए इनिशियली SC/ST स्टूडेंट्स को हम लोग दिया लास्ट 2-3 साल से। बट अभी CM मैडम ने अनाउंस किया कि दिस विल बी एक्सटेंडिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो ये तो सभी को मिलेगा, तो नेक्स्ट ईयर से पूरा मिल जाएगा। Regarding the stability